last what we talked about was the esophagus और esophagus के अंदर हम लोगों ने क्या बात करी थी कि esophagus is a muscular tube that connects the mouth with the stomach. It has smooth muscles, the longitudinal and the circular. When the circular muscles are going to contract, they're going to decrease the diameter of the lumen, while the longitudinal muscles are going to relax at the very same time when the circular muscles are contracting, pulling the food ahead, right? Guys, focus or I'm going to close the chats. All right. Now, so this movement through which the food is propelled ahead is what we call as peristalsis, right? Now, once we know what the peristalsis is, please remember that this peristalsis is continuing all the way from what we call as the esophagus all the way till the rectum. All right. So esophagus, this peristalsis is going all the way again from the esophagus till the rectum. Now, अब हम लोग क्या देखते हैं? Now that we know this, let's talk about the stomach. Now again, हमारे पास esophagus क्या कर रहा है? It's basically connecting the mouth towards the or till the stomach. अब हमारे पास स्टमक जो है ना, स्टमक के बारे में अगेन वी नीड टू रिमेंबर टू थिंग्स बिफोर वी गो अहेड. सबसे पहली चीज व्हाट वी नीड टू नो इज दैट the stomach or the pH of the stomach is acidic. That's the first thing that we're supposed to know. The second thing that we're supposed to know is that the stomach, what does it digest? It digests proteins, right? Up stomach है क्या? Stomach is a muscular bag basically. So what happens is अगर हम लोग stomach का structure देखें तो हम लोग क्या देखते हैं कि भाई let's say this is the esophagus is coming down, right? The esophagus opens up into a pouch-like structure like this. All right. And this structure, see, and this structure at the ends, एक मिनट बेटे, इधर ईशा बेटे, वालेकुम अस्सलाम बेटे. Only proteins, yes, only proteins, right? Now, as it comes down, right, it opens up into the small intestine. उसका हम लोग सिर्फ एक part बना रहे हैं because we're not concerned about that. ठीक है? अच्छा, अब देखो होता क्या है. Again, stomach is like a bag, right? तो इसकी एक opening होगी, उसका एक end होगा. This right here is the opening, this is the end. So what happens is, some will come to that later. A bag has to be closed. एक जगह से वो तो permanently बंद होता है, दूसरी जगह से हम लोग उसको zipper से बंद करते हैं so that things can remain inside, and that's why we're referring the stomach as a bag, right? होता क्या है? हमारे पास कुछ मसल्स होते हैं जो रबर बैंड की तरह मसल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग के ऊपर सराउंडेड होता है. देयर लाइक दिस. इस तरीके से इसको स्क्वीज कर रहे हो, इस तरीके से अंदर इसको स्क्वीज कर रहे होंगे. Now when they squeeze the opening and the outlet of the stomach, तो हमारे पास स्टमक की ओपनिंग जो होती है वो कैसी हो जाती है? इट मूव्स इनवर्ड्स, इट क्लोजेस, राइट, लाइक दिस. Now these muscles that are surrounding the opening and the closure, they are called as कौन से वाले muscles? They are called as sphincter muscles. Now these rubber band like muscles that contract to close the lumen are called as sphincter muscles. हमारे यूरिनरी ब्लैडर, हमारी एनल कैविटी, रेक्टम के नीचे भी होता है, एनल कैविटी के ऊपर. ठीक है? ऊपर वाला जो होता है उसका नाम कार्डियक होता है, नीचे वाले का नाम क्या होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर. नाम याद नहीं करना है. द ड्यूटेरम इज पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा मक्सम. ठीक है? ओके. नाउ अच्छा, अब होता क्या, एक बात याद रखिएगा, ये स्फिंक्टर्स ओपन और क्लोज कब होते हैं? ये जो नीचे वाला एंड वाला स्फिंक्टर होता है, द स्फिंक्टर एट द एंड और द पाइलोरिक स्फिंक्टर, लेट मी राइट इट डाउन, दिस इज कॉल्ड एज द पाइलोरिक स्फिंक्टर. ठीक है? उसकी एक टाइम है. It depends on the type of the food that you're eating. If you're going to consume a diet that would be rich in carbohydrates like or fiber,
it would it would open up after every 6 to 8 hours. But if you're eating a diet that is rich in lipids, it can remain closed for as long as 12 hours. ठीक है? जो ऊपर वाला स्फिंक्टर होता है जिसका नाम होता है कार्डियक स्फिंक्टर, वो हमारे पास क्योंकि हार्ट के करीब होता है, स्टमक इज लाइक दिस, टेढ़ा, इसका ऊपर वाला पार्ट, इसका नीचे वाला पार्ट, ठीक है, वो टेढ़ा यूं होता है। तो क्योंकि उसका ऊपर वाला पार्ट हार्ट के करीब है, हम उसके पहले पार्ट को कार्डियक कहते हैं और स्फिंक्टर मसल को कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। खैर, ये कब ओपन होता है? नाउ व्हेन द बोलस ऑफ द फूड इज एंटरिंग इनटू द एसोफेगस, द बोलस ऑफ द फूड जो हम लोग ने वाला खाया वो जब स्टमक में एंटर होता है, तो वो क्या करता है मेरे बच्चों, वो ईसोफेगस की वॉल्स के ऊपर एक छोटा सा स्ट्रेच लगाता है, because if the food is entering, it's going to stretch the walls, the esophagus, right? इस स्ट्रेच की वजह से ये जो हमारे पास कार्डियक स्फिंक्टर होता है ये ओपन अप हो जाता है, allowing this bolus to move inside the stomach. All right. Now, so this is how the cardiac sphincter opens. All right. Now when we talk about the muscle, the stomach, मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्टमक की वॉल्स को थोड़ा सा एविडेंट कर रहा हूं। कहने का मकसद क्या है? All these sections that I'm drawing, they represent the cells of the stomach. ये किसको represent करें? Stomach के cells को। जो हमारे पास stomach is an organ, right? It's going to be made up of tissues. The tissues are made up of cells, right? So I'm just showing the different cells that the walls of the stomach might have, right? और ये जो मेरे पास पूरा space होगा ये कैसा होगा? This is going to be empty. So hence we're going to consider this space as a what? As a lumen. Not usually, वो ऐसे ब्रेक, वो रबर बैंड नहीं कि ब्रेक हो जाए। No, it would, क्योंकि swelling mechanism के अंदर, like if you would swallow, तो you feel like some of the air also goes in. ठीक है, अच्छा अब देखो, अब होता क्या? The very first thing that the stomach does whenever it feels that the food is coming down to it, it produces a green colored substance, not a green colored substance, it basically produces a sticky substance and surrounds its walls with it, right? It surrounds its walls, उसके जो cells होते हैं वो एक green color का, very good Aisha बेटे, एक green color का fluid release करते हैं, a sticky fluid that we call as mucus. Green color का तो नहीं, एक sticky fluid release करते हैं, ठीक है, which is called as mucus. Now the very first thing that we are supposed to talk about, which we will talk about, is what is the significance of mucus. इसकी इसकी दो सिग्निफिकेंस है बेसिकली, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा, once that is done, only once the stomach has lined itself up with mucus, इसके जो cells होते हैं ये इसके lumen के अंदर कुछ ions को actively transport करते हैं, कुछ ions को actively transport करते हैं। कौन से दो ions को active transport करेंगे? Hydrogen ions and chloride ions. The hydrogen and chloride ions, along with some water, they're going to mix with it and form what in the stomach? HCl. ठीक है। अब दूसरी चीज हमें क्या पता होना चाहिए whenever we're talking about the stomach is the significance of hydrochloric acid. So this hydrochloric acid basically, this HCl basically, it acts as a what? उसकी पहली significance क्या है कि this acts as an antiseptic. It acts as an antiseptic. What is Dettol is an antiseptic. What does it do? It kills the microorganisms, right? Yes. और कंटिन्यूसली अगर हम लोग swelling करते जाएंगे, ईसोफेगस के ऊपर ज्यादा स्ट्रेच होता जाएगा, ठीक है, इरिटेशन नहीं, विल टेल यू, ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास, वो और म्यूकस की प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, ठीक है। Only when the stomach is sure कि I've produced enough mucus, it would start releasing the HCl, ठीक है। अच्छा, now HCl क्या करेगा? HCl is going to act as an antiseptic. It's going to kill the microorganism that's going to be present in the food.
Now, for example, let's say I washed an apple and I put it on the table. Within seconds, इसके ऊपर bacteria आके infiltrate कर लेंगे. Personally, I don't want any bacteria or any other microorganism to come into my food, but or into my body. So when I'm going to take a bite of that apple, all of that is going to go where? All of that is going to go into the stomach. ठीक है? Shall bete, please rename yourself. Ishal bete. So please rename yourself. I'm just putting you in the waiting room. All right. आ रहे हैं मुश्तबा उस वाली बात पे आएंगे, उस वाली बात पे आएंगे. ठीक है. HCl एसिड ही है तो ये HCl is very different from पेप्सिल. It is. आ रहे उस पे आ रहे उस पे आ रहे. ठीक है. पहली बात तो हमारे पास ये हो गई. दूसरी चीज क्या होती है? When this is done, the walls of the stomach, sometimes along with HCl, they release an inactive enzyme called as pepsinogen, right? This pepsinogen that we have is what is inactive. It only activates itself when it comes in contact with HCl. Whenever others को हम लोग इस तरीके दिखाए थे कि only when this pepsinogen is going to come in contact with HCl, it's going to convert into an active enzyme called as pepsin. So inactive pepsinogen converts into active pepsin, right? Now, this active pepsin, what does this do? It breaks down the proteins in the food into what? Into polypeptides. Now, proteins are very large, right? What is this pepsin going to do? It's going to break them down into smaller bodies of proteins called as polypeptides. फिर हमारे पास इंटेस्टिन के अंदर एक और एंजाइम होगा जो उनको फाइनली अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देगा. ऑलराइट. सो अगेन, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि भाई हमारे पास whenever the food's getting inside the stomach, what's happening is the stomach is first lining itself up with what? With mucus. Once that is done, it starts to actively transport hydrogen ion and chloride ions in the lumen where there might be some water present, forming HCl, right? What does this HCl do? Along with the HCl, the stomach also produces an enzyme called as pepsinogen, but that enzyme is inactive. Only in the presence of HCl, this pepsinogen is converted into active pepsin. And what does this pepsin do? It breaks down the proteins in the food into polypeptides, right? तो HCl की दूसरी significance क्या हो गई? That it activates pepsinogen into active pepsin. All right. अच्छा. अब बात ये है now coming back here. दो चीजें. सबसे पहली चीज, do I want the HCl, which is corrosive, it's an acid, to come in contact with the walls of the stomach? No, I don't. Right? To prevent the HCl from coming in contact with the walls of the stomach, what happens is the mucus is there. So mucus पहली चीज क्या कर रहा है? It prevents the HCl from coming in contact with walls of the stomach. पहली चीज. All right, पहली चीज. दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज क्या होती है कि pepsin is digesting proteins, right? Your stomach is also made up of proteins. Do you want your stomach to be digested? No.
So the walls of the stomach, which are lined up with mucus, are also preventing, or the mucus which is lining up the walls of the stomach is also preventing the pepsin to come in contact with the stomach walls. अगर पेप्सिन स्टमक वॉल से कांटेक्ट में आ गया तो फिर क्या होगा? स्टमक वॉल्स भी क्या हो जाएंगी? डाइजेस्ट हो जाएंगी, राइट? अगेन वी डोंट वांट दैट. So what happens is it also prevents pepsin from digesting the walls of the stomach. And you see the cells that would be producing pepsin. No, no, we would have a stomach. ऐसे इतनी जल्दी नहीं होता. I'll tell you ये क्या होगा. Uh, the very reason that, or this is the very reason कि हमारे पास जब the cells that are making up the pepsin, they are also going to have proteins, right? अब अगर वो पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में रिलीज कर देते, एक्टिव फॉर्म में रिलीज कर देते, फिर क्या होता? फिर तो वो जो सेल्स जो पेप्सिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो खुद भी डाइजेस्ट हो जाते हैं. Because of this, pepsin is released in an inactive form. जब वो स्टमक में आ जाएगा, HCl से contact, when it's going to come in contact with HCl, only then it's going to activate itself. क्योंकि HCl प्रोडक्शन से पहले इन अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल मेरे पास मसल की वॉल्स किससे लाइन अप हुई हुई है? म्यूकस से लाइन अप हुई हुई है. डू वी गेट इट? राइट? डू वी गेट इट? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ऑल राइट, नाउ नाम साम बोलो बेटा. जी मैं साम बेटा. aside from पॉलीपेप्टाइड्स का सवाल क्या है? प्रोटीन से टू अमीनो पेप्सिन नहीं करता, उसके लिए हमारे पास एक और एंजाइम होता है. ठीक है, हमारे पास एक और एंजाइम होता है. लाइक तनिषा प्लीज स्टॉप रिएक्टिंग. ठीक है, हमारे पास एक और एंजाइम होता है, उसे इरेप्सन कहते हैं. वेलकम देयर. ठीक है. अच्छा आप देखो, अब होता क्या है, कुछ लोगों के अंदर, which can be because of many factors. It could be because of excessive smoking. ठीक है. It could be because of excessive spices, excessive adrenaline. होता क्या है, ये जो कुछ जगहों के ऊपर, कुछ पैचेस के ऊपर हमारे पास म्यूकस प्रोडक्शन रुक जाती है, ये म्यूकस कम प्रोड्यूस होता है. नाउ इन at those places अगर HCl या फिर पेप्सिन कांटेक्ट में आएगा ना, it can cause some burns, right? Or and this leads to a condition called as ulcers, right? Peptic ulcers कहते हैं उसे. बहुत whenever the person would eat something, उसको बहुत जोर से जलन होगी मैदे के अंदर, पेट के अंदर. ठीक है. सो अगेन, अब अगर ये सवाल आए हमारे पास कभी भी एग्जाम के अंदर, वो बोले, ये आ चुका है कि adrenaline is a hormone that sometimes reduces the secretion of mucus, suggest what's going to happen. हम कहेंगे भाई it's going to burn the stomach walls, right? नहीं नहीं, मोनोपॉलीसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स कहाँ से आ गए मेरा बच्चा? स्टार्च इज द पॉलीसैकेराइड, राइट? उसको तो एमिलेज ब्रेक डाउन कर रहे हैं. वो तो कार्बोहाइड्रेट्स, हम तो प्रोटीन्स के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. दैट्स अ होल डिफरेंट वो. ओके नाउ, इट्स ओके, बस अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो याद रखो. ओके, मूविंग ऑन. अच्छा आप एक और चीज देखिए,
तो हम लोगों ने यहाँ सवाल बनाया कि भाई क्या, कि what will happen if mucus production is reduced, right? So we'll say that the HCl and pepsin will damage the stomach walls, causing what? Causing ulcers. Ulcers का मतलब होता है छाले. All right? The stomach line will be harmed. They're going to be burned. बिल्कुल बेटे, बिल्कुल बेटे. ठीक है? Okay. All right. Good enough. Now. Okay now. अब एक और चीज, अब एक आखिरी चीज, ठीक है? आप Do we have anyone at home or do we have any infant at home? Infants क्या होते हैं? Newborn babies, which are on a milk diet, who only drink milk. So do we have any younger siblings, uh, you know, or anyone that we know who is an infant? Right? No, not that yet. Okay. Chalo, a cousin. All right. अच्छा मुझे एक बात ही बताओ. What do infants drink? What do they drink? They drink milk. ठीक है. और मिल्क का स्टेट क्या होता है? मिल्क का स्टेट लिक्विड होता है. ठीक है. If you've ever changed their diapers, so you would see that their poop is solid, right? So if they're consuming something that's liquid, how how is the poop going to be solid? Right, that's a very valid question. ठीक है, Moniza, you should. होता क्या है, जो soluble milk proteins होता है ना, how Aisha, how does it solidify? ठीक है, that's what we want to know. जो soluble proteins होते हैं, they're a bit difficult to digest, right? So what happens is, only in infants only, हमारे पास बच्चों स्टमक के अंदर एक और एंजाइम होता है जिसे हम लोग कहते हैं रेनिन. व्हाट डू वी कॉल दैट एंजाइम? दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज रेनिन. वो रेनिन क्या करता है, वो सॉल्यूबल मिल्क प्रोटीन्स को, वो मिल्क प्रोटीन्स जो डिसॉल्व हुए हुए हैं, जो सॉल्यूबल हैं, उनको कैसा कर देता है? उनको इनसॉल्यूबल कर देता है, राइट? मेकिंग इट इजियर फॉर द एंजाइम्स टू एक्ट. ऑलराइट. सॉरी, हाँ, इनसॉल्युबल होगा तो उसकी स्टेट क्या हो जाएगी? अगेन दे गोइंग टू बी इन अ प्रेसिपिटेट वाली फॉर्म. दे गोइंग टू सॉलिडिफाई. दे नॉट गोइंग टू डिसॉल्व इन वाटर एनीमोर. So that's one of the reasons why the poop is solid. Renin is an enzyme. It's an enzyme. Renin हमारे पास क्या है? It's an enzyme जो क्या करेगा? Soluble milk proteins को insoluble milk proteins में convert कर देगा. उन insoluble milk proteins को कौन break down कर देगा? Pepsin. Again into what? Polypeptides. Do we get it, Laiba beta? All right, all right. अच्छा जी. नहीं होता बेटे, नहीं होता. Because we also have solid diet, right? उनकी तो है ही pure liquid diet. So that's all about the stomach. Infants have this extra thing, yes. ठीक है, उनको जरूरत नहीं पड़ती, रिक्वायरमेंट नहीं होती निशा. जो उनको जितना वाटर चाहिए होता है वो मिल्क से मिल रहा होता है बेटे, सारा एब्जॉर्ब हो जाता है.